So I'll repeat somebody has asked a clarification and kind of a question also. And what she asked that, should we chant Gita shlok or not? Because there is chanting, Gita shlok chanting bhi hota, like bahut jagah there is a Guinness Book of World Record. Some kids have recited Gita shlok for 12 hours. So she's asking that, should we chant Gita shlok or should we just? So the answer is, we need to understand the fundamental of all our Shastra, right? In broad sense, there are three things in our whole compilation, I can say, our rishis or our ancestors, those who have compiled. One is called mantra, second is shlok, and third is stuti. So mantra is, for example, mantra is a Gayatri mantra. We call it Gayatri mantra. And the definition of mantra is mananat trayate iti mantra. By chanting which the fear of or man is protected. Man is protected means there are two things. Either man has fear because we always wondering about future, or man is doing some here and there, always disturbed, like agitated. So protecting man means, and while saying protecting man means, man ka original nature is shant, and we all want that. Man means mind. We all want peace of mind. There's peace. हमेशा बोलते रहते. मन शांत रहना चाहिए, but man is agitated. So by doing mantra chanting, man is protected. Man remains shant because bhai chala jata hai, agitation chala jata hai. That is mantra. So that is, for example, Gayatri mantra, right? The second is shlok. Shlok word has come in Sanskrit word, which is an expression. जिसमें emotions are expressed. Mantra में there is no emotion. Mantra is a formula. That's why the word use mantra. आज का मंत्र यहाँ तो बहुत use करते हैं आजकल. What is a mantra? Like the hospital's mantra is to keep everyone healthy. That's the mantra of hospital. Stock market mantra is to make more profit. So mantra is a formula. So mantra का जप करते हैं, and mantra का जप हमेशा मन में किया जाता है, most effective to protect the man. There's a definition. A shlok has a definition, which is an expression. Its expression could be emotional, and the story goes like this very quickly. The first shlok written on this earth was by Valmiki, and the Ramayana is the first shlok compilation. उसके पहले सारे मंत्र होते थे पहले. Valmiki ji ने रामायण जब अंदर story we know he saw the bird was hit and all those things. But out of shock, out of emotion, he said something to that hunter, and then he realized, no, he cursed the hunter, and to overcome that his own feeling of that curse, he asked Naradji, what should I do? And Naradji said, write something about a great character, then you will overcome that guilt. And he said, who's the great character? He said, Dashrath Putra Rama. They write his story. So he wrote Ramayana. So Ramayana he wrote in shlok format, and that's expression. So Gita is shlok, because here it is expression, it is communication. Gita is not mantra. So Gita के जो है वो श्लोक है. So entire Ramayana, entire Mahabharata is in shlok form. Shlok is in communication. इसलिए आखिरी में बोलते हैं गीता संवाद है. हम लोग जब श्लोक भी पढ़ते हैं आखिरी में जो गीता के श्लोक में कि संवाद between Arjun and Krishna. So it is an expression where Arjun is asking question, he is emotional, Bhagavan is giving answer. So that is shlok. And third thing is stuti. Stuti means praise. Stavan, shabda se aaya, praise. So Gajananam Bhoot Ganadi Sevitam Kapitha Jambu Phalasara. It is stuti. We are praising Ganesh character. Shiv ji ki stuti hai. Vishnu ji ki stuti hai. Sahasnam. It is stuti. Stuti means stavan, praise. So mantra and stuti are as we said, like to be done for a purpose. But shlok is kind of expression, discussion. So Gita is shlok. तो मंत्र का चैंटिंग होना चाहिए क्योंकि मंत्र हैज अ रीजन फॉर दैट. लेकिन श्लोक की जरूरी नहीं है चैंटिंग करना. तो आपको याद करना जरूरी नहीं कि रोज आप गीता की रोज चैंटिंग करें और फिर तब आपको गीता इफेक्टिव होगी. मंत्र इफेक्टिव विल बी देयर बिकॉज यू हैव टू डू मंत्र जप मन में, देन मंत्र विल बी इफेक्टिव.
Stuti is, of course, I mean, you're standing in front of Bhagwan Krishna or Ganesh or Saraswati or Durga, and you have to say that Stuti, Ya Devi Sarvabhuteshu Matar Rupena Samstita. You're praising it. So there's a communication between. But shlok is a different thing. So इसलिए गीता पूरी महाभारत and गीता. So श्लोक की chanting is not required. But श्लोक का meaning आपको आना चाहिए. So that's the reason some of the shlok Bhagavad Gita के we should memorize, so that when if we don't have the book, the reason of memorizing is if you don't all the time available book is not there, then if you have memorized the shlok, then you can play in the mind but with the meaning. That's why we go very slow. That's the reason the most commented book on in Indian history or Hindu history is Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, where you'll find many commentaries and big commentaries. अभी आप लोग एक शब्द का वो लोग description भी करते हैं. There are scholars, they have done one word, they'll take one page of commentary on one word. That's the reason, because it's a shlok, it's a communication, it's a teaching, it's an explanation, exchange of emotion. So that's the reason you don't have to chant. If you can chant, it is good. There is no harm in chanting, but it is not like mantra stuti. There's required chanting, but Gita shlok you can chant, but not required. So that's the answer. And क्या होता है फिर chanting में, chanting has a melody. स्तुति स्पेशली, मंत्र तो मन में बोलना चाहिए, उसमें मेलोडी नहीं होती. लेकिन स्तुति में तो गजाननम और गणेश जी की आरती हो रही है और ढोल बज रहे हैं और बढ़िया गा रहे हैं. तो मेलोडी में, बिकॉज योर माइंड इज अ साइकोलॉजी, माइंड गोज अवे विद द मेलोडी, देन यू लूज द मीनिंग. आप कभी आरती करते हैं, जय जगदीश हरे, कोई भी आरती करते हैं, किसी को कोई मीनिंग पता नहीं होता. मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा हनुमान चालीसा का मतलब, कुछ नहीं पता. सबको हनुमान चालीसा आती है, सबको मजा आता है, विच इज गुड. और ढोलक बजा रहे हैं हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. इट इज सो प्रोफाउंड. अगर आप ठीक से एक एक शब्द देखें, तुलसीदास जी हैज पुट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंटेलेक्ट ही हैड इन हनुमान चालीसा. लेकिन किसी को कोई लेना, तो मजा आता है गाने, बिकॉज वी एंजॉय द मेलोडी, विच इज फाइन. यू गेट दैट थोड़ी देर. तो लेकिन क्या होता है, वो दैट इज अ मनोरंजन, नॉट एंटरटेनमेंट इन बॉलीवुड हॉलीवुड सेंस. मनोरंजन वर्ड इज वेरी, बहुत अच्छा वर्ड है. ऐसा नहीं है कि इट इज अबाउट बॉलीवुड. तो हम लोगों ने ऐसा लगता है मनोरंजन मीन्स ऑलवेज बॉलीवुड हॉलीवुड. नो, मनोरंजन मीन्स, रंजन मीन्स वेयर माइंड इज डिलाइटेड. मन रंजन, रंजन शब्द मीन्स डिलाइटेड. रंजन नाम भी होता है लोगों, हमारी रंजन बहन है हरिभाई की, डिलाइटेड, राइट. तो व्हेन मन इज डिलाइटेड, इट इज मनोरंजन. तो आपको हनुमान चालीसा गाने में मनोरंजन होता है, लेकिन श्लोक से मनोभंजन होता है. भंजन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग विच इज नेगेटिव इन द माइंड. जो डिल्यूजन अर्जुन को था, इसलिए भगवान ने गीता कही. हम लोग क्यों गीता पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी हैव समवेयर आई नीड आंसर्स, आई हैव क्वेश्चंस. There is some delusion in my mind. I want the answer. That's why I'm reading Bhagavad Gita again and again and again, and for thousands of people, millions of people. And so that's the reason. So that is the reason we don't have to chant. We can chant, it's fine, but it is not requirement for Bhagavad Gita as a chant. भगवत गीता से मनोरंजन नहीं करना है. भगवत गीता से, बिकॉज मेलोडी में ही प्रॉब्लम होती है. अब जैसे आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ, बड़ा पुराना एक सॉन्ग है. द मोमेंट कोई किसी प्रोग्राम में आप जाते हैं और कोई आर्टिस्ट स्टेज पे आता है और बोलता है कि मैं आई एम गोइंग टू सिंग नाउ मन्ना डे का लागा चुनरी, और एवरीबडी स्टार्ट क्लैपिंग. द मोमेंट ही सेज आई एम गोइंग टू सिंग लागा चुनरी में दाग, लोग ताली वाली बजाने लगते हैं, और पीपल जस्ट द मोमेंट इससे मन्ना डे, और सब लोग बस सिर्फ एंजॉय दे. मन्ना डे नहीं गा रहा, दूसरा आर्टिस्ट है, बट मन्ना डे, आई मीन ही वाज अ क्लासिकल सिंगर, एंड द म्यूजिक ऑफ कोर्स रोशन का म्यूजिक था, तो लोग उसको एंजॉय करने लगते हैं. बट वी फॉरगेट द मीनिंग इन दैट. एंड आई ऑलवेज गिव एग्जांपल, लागा चुनरी में दाग, उसमें आगे एक लाइन बोलते हैं साहिब, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, और जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, क्योंकि लागा चुनरी में दाग. और ही इज सेइंग कि ये मेरा शरीर आत्मा, ये मेरी आत्मा इतनी प्योर थी, इस संसार में आके मैंने इस आत्मा को मैली कर लिया, माया जाल, मैल है माया जाल. व्हाट ही इज सेइंग एग्जैक्टली, भगवत गीता इज सेइंग इन द सेकंड चैप्टर. बट कितने लोगों ने सालों से उस सॉन्ग को सुन रहे हैं, हु हैज एनालाइज, बिकॉज वी गेट इनटू मनोरंजन. द मोमेंट मेलोडी कम्स,
our mind gets away with the melody. मनोरंजन शुरू हो जाता है. तो श्लोक is not for मनोरंजन, it is for मनोभंजन, the doubts निकालने के लिए. इसलिए we get into chanting a melody of श्लोक, फिर वो मेलोडी में चले जाते हैं. जैसे वो सत्यम शिवम सुंदरम, जैसे ही गाना शुरू होता है, लता मंगेशकर की आवाज एंड एकदम म्यूजिक, कल्याण जी आनंद जी का, एंड वी गेट इनटू दैट. उस गाने के बोल कभी आप पढ़िए, एक सूर्य है, उस the whole purpose of writing the song narration was because in the movie there was a discrimination. This lady is not same as others, so this lady, so that's what they wanted to show that song में. एक सूर्य है, एक चंद्रमा, एक ही धरती माता, दया करो प्रभु एक बने हम, सबका एक से नाता. He is talking about the unity in the society. But how many people pay attention? Satyam Shivam Sundaram, Lata Mangeshkar and Kalyan Ji Anand ji, we enjoy. That's fine. The melody. That's the reason Bhagavad Gita shloka is not melody. And we should not get into the melody. Okay? You can chant, कभी अच्छा लगे तो. लेकिन जब चिंतन करना है, स्वाध्याय करना है, then it has to be read as a shloka with understanding. So that's what my explanation of that why Bhagavad Gita. Why cannot we cannot be chant, but when we are doing swadhyay, we don't have to chant. We have to read it and then analyze it. So that's the answer. Let's go into our